always a delight to be back here at the NED University. I've spent some years of my life here, and I owe a lot to this institution because I got a lot of knowledge from here, and it's always a pleasure coming back here, and it's an added pleasure to be here today on this important occasion where we've inaugurated the first Google Gemini for Education Center at the NED University. I recall from my days here, when we joined the NED University, there used to be a computer center. It was a room where we were not allowed to go inside. We would only punch cards and submit it to them. They would run those. This is how we started. But then things started changing, even during the 4 or 5 years that I was here. Supposed to be here for 4 years, took us 5.5. We were just slow learners, I believe. And we started, calculators were there, and we had programmable calculators. Being a student of civil engineering, I had a passion for structural engineering at that time. And I was just jotting down the calculators or the programmable calculators during the few years at NED that I had acquired. It was the Texas Instrument, it was TI-58C or TI-59, I've forgotten the number I had. Then Casio came up with a pocket computer. It was the Casio 702P, and I remember using that. And then Sharp at that time came up with a machine called PC-1500. It was a big handheld which used to program in BASIC. From those days, where and we didn't need to go to the computer center at all, because these small machines on our hand would do more than those big mainframe computers. And that is how computing has moved. And today we were in a room where you were connected to the world. So it's not just peers, and you can compete with the world. So things have changed, and it's good that I'm here at the NED University to see this change over the years. I'm grateful to Google for having this first center here. What I'd like to do is, and I'll commit the Government of Sindh's resources for this, to replicate this in all public sector universities in the province. Apart from that, we have built a youth center in each district. And the youth center, the objective of this youth center was a place where the youth of the city or the district could go and have opportunities to play games, interact, have a library, have a computer center. And what I propose is, and I'll ask the IT Minister to work on this, to have a Google Gemini Center in each of these youth development centers. We've got 30 of them. We've got the space, and this is, we can take this to the next level. We started with NED University, but we can really take it forward. In terms of the Government of Sindh's initiatives towards getting our youth interested in IT, giving them the platforms, giving them the resources, we started the People's Information, what was called People's PITP, People's Information Technology Program. And we have, last year we had allocated 500 million rupees for it. And because of its success, we added another 900 million rupees, and we spent 1.4 billion rupees last year on this. This year, which starts today, the financial year, the allocation for the PITP is 2 billion rupees. And inshallah, I'm sure that, I forgot one story. After those small handheld machines which we got in our second year of our studies here, I got a computer which
nobody would even know. I think people of my age would probably know. It was a Commodore 64. And we had to hook it up with the television, and in order to store your program, it came with a cassette player. People don't even know what cassettes are any longer. Came with a cassette player, and once you program it, you had to transfer it to the cassette tapes and take it back. And then a colleague of ours went out and he got an Apple II. I think it was Apple IIe at that time. And he would do wonders with it. So this is how fast I also consider myself not that old. I'm old, but not that old. But I've seen all this in my life. So thank you very much. It is really important for us because there is no dearth of talent in our country. It's only opportunities that we've not been able to give them. And inshallah, with centers like this, the opportunity will be there. They'll be connected to the world. They don't have to. I was in a discussion earlier today, and I said, Umar had made a statement in his opening remarks that he said was that we just need to build the foundation, and then the student can learn. And we were in a room where all the university vice chancellors were sitting, and I told him that you're putting all the universities out of business because students would no longer. They just need to have a strong foundation, because what I understand is that, and I've given this example before in that room earlier, what I learned of AI a few decades ago, it was defined as to teach computers to do things at which humans at the moment are better. That was the first definition that struck me, I remember. And give you an example, computers a few years ago, or even now for that matter, can do a 6-digit multiplication or division in nanoseconds. Humans can't. But a computer could never tell you, if you sit in front of a computer and ask him, who am I? He would not be able to tell you, but somebody who knows me, a human, would immediately know. So what I did just now, sitting here, is I got my Gemini account a few moments ago. So I posted my picture and I said, who's this? And Gemini came back, the person pictured in image is Syed Murad Shah, he's the Chief Minister of Sindh. So I went on, I said, tell me more about him. And it's given me half a page. The first sentence is wrong. And the reason that it is wrong is because that's the information that is floating around. My date of birth is 11th of August. But somehow somebody wrote it the American way as 9/11. 8/11, sorry. So, public records show my date of birth is November 8th. And I got a lot of birthday messages on November 8th also. So, again, AI is still not perfect. It can make mistakes. And that is where you need humans to make sure. One more month, I think we'll see the changes. So, I'm grateful these modern Chromebook devices, which are cloud-based ecosystems, will enable collaborative learning and innovation. And I'm sure that we make use of it. And as I said, the government of Sindh will put all its resources available. And we strongly believe in investing in education, in technology. As I told you, in the last few years, we started this PITP program initially in 2024-25. So this is the third year now that we'll be continuing with it. And inshallah, we've been putting in more money. One thing that I want to do, and Ali Rashid just told me, they've been very successful. There's a girl from Yamshoro, which is my home district, who learned this. She's a daughter of a rickshaw driver, and she made so much. She made money, and she bought a new rickshaw for her father. So these are stories that we want to replicate, and inshallah, the youth are the future. All we need to give them are the skills, the opportunity, and that is what they'll take this country to the next level. So once again, thank you very much. It's a pleasure as always to be here, and inshallah,
I look forward to opening more of these global centers around the province, in public sector universities and in our youth centers. Thank you very much. आपने बोला था कि जैसे ही नया साल स्टार्ट हो जाएगा तो वफाक से जितने फंड्स रहेंगे वो आपको मैं बता दूंगा, कितने फंड्स पहले उसमें आए वो बता दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और इस सिलसिले में मैं इनको लिखने भी लगा हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ। कहाँ गया यार वो, कल का ही मैसेज होगा ना। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 175 अरब रुपए हमें मिलने थे, जो उनका रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है ना उसके हवाले से 175 बिलियन ड्यू था और हमें कल मिला है। अब मुझे पता नहीं क्यों 30 जून को 175 बिलियन आना था, जो रिवाइज एस्टिमेट के हवाले से। मैं गलत नंबर नहीं देना चाहता, उससे काफ़ी कम आए, खाली 95 बिलियन के करीब आया, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ये रहा, मिल गया मुझे। सॉरी 91 बिलियन और 25 बिलियन आया, 91 बिलियन, तो तकरीबन 75 और 8 83 बिलियन जो है वो अभी भी ड्यू है, जो रिवाइज एस्टिमेट के हवाले से, और उस सिलसिले में हम फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे। अच्छा सर साहब, आजकल एक नई बहस चल रही है कि कराची के जो बल्दियाती निज़ाम है वो वफाकी वजीर भी उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सूबा ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं जहाँ कोई बल्दियाती निज़ाम ही नहीं है। तो ये देखिए मैं नहीं करना चाहता इसमें ज़्यादा बात, वो आपने खुद ही सवाल भी कर लिया, जवाब भी दे दिया। जहाँ पे बल्दियाती निज़ाम सिरे से नहीं है वो बड़े रेजोल्यूशंस भी पास कर रहे हैं और पता नहीं क्या से क्या कह रहे हैं। इवन इस्लामाबाद में नहीं है, आपको पता है बल्दियाती निज़ाम, और सिंध में बल्दियाती निज़ाम है, उसमें बेहतरियाँ चाहिए, उस कभी हमने इनकार नहीं किया और हम हमेशा ज़्यादा एम्पावर करने की बात करते हैं। लेकिन जो लोग बात करते हैं पहले अपने इलाकों में, अपने सूबों में, अपने रीजन्स में, चाहे वो मिनिमम, या हम तो एक और भी बात करते हैं, जो प्रपोज्ड बल्दियाती निज़ाम किसी और सूबे का है वो चल रहा है, वो जो लॉ है, अगर वो आप लगाना चाहते हैं सिंध में तो हम भी उसको लगाने नहीं चाहेंगे, इसलिए कि उसने इतना कमज़ोर कर दिया है बल्दियाती इदारों को कि इससे ज़्यादा कमज़ोर हो नहीं सकते थे। अभी बना भी नहीं है वो, फिर भी कुछ डिवॉल्व से सूबाई सब्जेक्ट जिनमें बहबूद आबादी और दीगर तरह के शामिल दोबारा विफाक को लेने की तजवीज़ का सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदरत इजलास भी हुआ बहबूद आबादी के इशूज़ से मुतालिक, और एक और नेशनल कौंसिल बनाने की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ इस टेन्योर में अब तक जो इदारे, कमीशन, कमेटियाँ और कौंसल्स बनाई हैं उसकी तादाद करीबन 50 हो चुकी है। क्या ये तरीक़ेकार ही गवर्नेंस का बेहतर है? नंबर वन, जो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो डिवॉल्व हो गए हैं प्रोविंसेस को, वो 18वीं तरमीम के थ्रू हुए हैं, और जब तक कोई आइन में तब्दीली नहीं आती, जिसका कोई चांस नहीं है, तब तक कुछ होगा नहीं। हाँ, अगर कोऑर्डिनेशन के लिए पॉपुलेशन वेलफेयर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक बड़ा इशू है हमारे मुल्क के साथ, अगर उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए फेडरल लेवल पे ताकि सूबों से कोऑर्डिनेट कर सके कोई इदारा बनते, तो मुझे उस पर पर्सनली कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है वो आइन के मुताबिक सूबों के पास ही रहेगी। एक छोटी सी दरख्वास्त है, ये आज़ाद लोडियो का बेटा आया है, उसके चाचा को उठाया गया था कल छोड़, मुझे पता नहीं, मैं चेक कर लूँगा। छोड़ थाने का इशू है, मैं चेक कर लूँगा, अभी तक कोई ऐसे जो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पर मैंने मुझे पता ही नहीं है, जब चीज़ का मैं पता कर लूँगा। भाई मैं गलत तो नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा गलत कह रही हूँ, ये कौन तो चाह कि गलत आप, मैं पता कर लूँगा। शाह साहब, एक इशू की नई लहर दहशतगर्दी की जो खासतौर पे आपने मुहर्रम में भी बात की थी कि खतरात तो होते हैं, लेकिन वो एक दोबारा शुरू हुई है। कल भी एक वाक़या आपने नोटिस किया है और वो अभी कराची में भी हुआ है, तो ये आपने कहा था कि कोई स्पेसिफिक थ्रेट तो नहीं है, लेकिन ये नहीं, मैं बस बता रहा हूँ, स्पेसिफिक थ्रेट वो होती है जब पता चले हमें कि फलाने लोग हैं, इस जगह से आएंगे, इस जगह को अटैक करेंगे और इस दिन करेंगे। ऐसी कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है। हमने इंटेलिजेंस को बेहतर करने के लिए कई नए इदारे बनाए गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी और सूबे भी उनके साथ मिलकर बना रहे हैं, इसलिए कि अभी ये इंटेलिजेंस का ही काम है। जो शख्स अपनी सुसाइड बॉम्बर्स जो हमारे पास ये नया ट्रेंड पिछले कुछ सालों से निकला है, जो अपनी ज़िंदगी खुद उड़ाना चाहता है उसको रोकना मुश्किल होता है सिवाय इंटेलिजेंस के। तो जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं। आगे ये चहलम
بھی آئے گا، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہمیشہ جو یہ دہشت گرد ہیں ایسے مواقع ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اس اس کے ٹوٹل جو ٹاؤن ہے اس میں 12 سے 18 گھنٹے غیر قانونی لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ میں اس کی مذمت کرتا ہوں سخت. 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اس لیے کہ اور ایک طرف 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، دوسری طرف وفاق ہمیں بجلی گھر سولر پہ اور ونڈ پہ لگانے نہیں دیتا. تو یہ ڈیلیما مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے اور کب یہ ختم ہوگا. تھینک یو.